हो गई, स्टार्ट हो गई। ओके 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 ओके, गुड। सो लेट्स डू दिस, लेट्स डू द डंप वन। ठीक है, डंप कर लेते हैं हम लोग। डैश ओ एंड देन विल डू ये वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डंप के नाम से। ओ, हो गया। और हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड देन विंडोज, प्रोबेबली विंडोज डॉट डंप फाइल सा, विंडोज डॉट डंप फाइल्स। डंपिंग चल रही है, ये सारी फाइल डंप हो रही है। हम लोगों ने कल फिजिकल एड्रेस से भी ट्राई किया था बट हुआ नहीं था। ये भी हम लोग हैकर डॉट लॉग ऑटो लॉगिन WMI। अच्छा, बाय द वे, अगर आप डंप कर रहे हो ना तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज एग्जैक्ट आपके पास मालवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा डंप करने से। तो सारी फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स डंप हो गई हैं। EVTX फाइल यहाँ पास है, विंडोज इवेंट फाइल है ये वाली फाइल अभी हमने क्रिएट की है। ठीक है, ये देखो, 00000.eky वाना डिक्रिप्टर हमारे पास। हो गई, सारी डंपिंग हो गई। इसमें मैपिंग की है और ये हमारे पास ऑफसेट है, फिजिकल एड्रेस, और आपके पास दूसरा आ गया वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, तो इससे तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि .eky है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके .eky करोगे तो यू कैन गेट द एग्जैक्ट eky फाइल। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर eky एक्सटेंशन इससे पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 0000 ये वाली फाइल है। अच्छा,
हमारे पास जो है ना, हम लोग डॉट मैम फाइल जो है ना, हम लोग एफ टी के मेजर वगैरह में नहीं ओपन कर सकते, बिकॉज यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू सम अदर extension, ठीक है, so that ठीक है मुझे कैन read your files. तो अ, ठीक है, ये हो गया था कल का चैलेंज जो रह गया था हमारे पास। और अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग एक और चीज़ है कि हम लोगों ने ये वाला कमांड रन किया था ना, राइट, फाइंड डॉट ई के वाई, तो यहाँ पे कोई मसला है टू द मतलब स्क्रिप्ट में कोई मसला है, ठीक है, वरना जो है ना ये चल जाता। अम, ऐसे ही अगर हम लोग इसके अंदर आए ना, आप लोग को मेरे लिनक्स दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। ओके, तो एक मिनट में आप लोग को दिखा देता हूँ उसे। हमारे पास इन्फेक्टेड कहाँ गया, रुको। डाउनलोड्स में हमारे पास है, ये रहा इन्फेक्टेड, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, इसके अंदर भी एरर आ रहा है, ठीक है, एंड द रीजन इज कि हमारे पास जो है ना, डॉट फाइल अटैच एफ फॉर द फाइल, और फिर उसके बाद हमारे पास अ, ये फाइल पिक नहीं कर रहा है, जस्ट 1 मिनट इसको करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विंडोज डॉट पी एस स्कैन डॉट पी एस स्कैन, ये रीड नहीं कर पाएगा, ठीक। क्यों रीड नहीं कर पा रहा? बिकॉज इट सेज अनसेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट फॉर द प्लगइन। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्या किया था, वोलेटिलिटी थ्री सीरीज सिंबल्स, ठीक है, इसके अंदर जो एग्जैक्ट सिंबल मैंने अभी यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, ये वाले सी एल आई वर्जन में, यहाँ पे वो एग्जैक्ट सिंबल जो है ना मैंने वो एग्जैक्ट सिंबल जो है ना मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे यूज किया। तो एनीवेज, आप लोग अगर एग्जैक्ट सिंबल के साथ
करेंगे ना काम, तो जाके आप लोग की फॉरेंसिक होगी, खास तौर से मेमोरी फॉरेंसिक। मुझे याद पड़ता है अपना हैक द बॉक्स के अंदर जो है ना, एक शेरलॉक का चैलेंज हुआ था 6 महीने पहले। उसके अंदर बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि एग्जैक्ट सिंबल निकालना एक आर्ट है। यहाँ पर भी बिकॉज उसके पास एग्जैक्ट सिंबल नहीं है, तो वो जो है ना देता नहीं है। अच्छा, हम लोग का अगर एक सिंबल पकड़ना है तो देर इज अ वे। मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। विंडोज प्रोबेबली। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग के पास एग्जैक्ट सिंबल फाइल के साथ बता रहा है, राइट? ये सिंबल फाइल है इसके पास। और ये देखो, एग्जैक्ट सिंबल फाइल इसने यहाँ से उठाई है, बट स्टिल ये रन नहीं कर रहा है जो कमांड हम दे रहे हैं इसको। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो रन कर रहा है। यहाँ पे जो वर्किंग हुई थी इसके ऊपर ना, मैंने कुछ कमांड इसके ऊपर रन किए थे। फिर उसके बाद जाकर जो है ना ये सिंबल फाइल, फिर उसके बाद जाकर जो है ना ये सिंबल फाइल, मतलब फिर उसके बाद जाके कमांड चले थे बेसिकली। तो ये वाला मैंने एक कन्वर्टर यूज किया था। और देखो ये मेरे पास जेसन पड़ा हुआ है, डॉट एक्स वाई जेड। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंबल में इसको जाकर अपलोड किया था। तो वो सारा कमांड लाइन के जरिए हुआ था। अच्छा, लेट्स डू क्विक रिकैप ऑन ऑन लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। हम लोगों ने जो पहला सेशन किया था, पहले सेशन के अंदर हमारे पास फंडामेंटल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस के अंदर। और हमारे पास जो एक टीम का स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत, अच्छा ये हम लोग बहुत ओवरव्यू लेके चलेंगे, इतना डीप डाउन डिग डाउन नहीं करेंगे इसके अंदर। हमारे पास सबसे पहले है ब्लू टीम और रेड टीम और पर्पल टीम। ठीक है, हमारे पास तीन टीमें फंक्शनल टीम होती हैं, जो कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर एक टीम होती है, उसके बाहर एक टीम होती है, और उन दोनों को मिला के एक टीम होती है। ठीक है, ब्लू टीम हमेशा जो है ना डिफेंडिंग साइड पे होती है, हमेशा ये डिफेंसिव खेलती है। रेड टीम हमेशा ऑफेंसिव खेलती है। ठीक है, हमेशा वो अटैकिंग मूड पे होती है। ठीक है। आपके पास यहाँ पे आ गया ब्लू टीम, और आपके पास यहाँ पे आ गया रेड टीम। इन बिटवीन हमारे पास एक प्लेयर है जो कि क्या करता है, ये पर्पल टीम करता है, प्रॉपर पर्पल टीम करता है, लाइक प्योर पर्पल टीम करता है। ठीक है, ब्लू टीम ऑलवेज डिफेंडिंग, ऑलवेज डिफेंडिंग। अच्छा, बाय द वे, ये पर्पल टीम और रेड टीम बाहर से नहीं है, ठीक है, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारे पास सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और ये जो है ना रोल डिफरेंट है, लाइक अगर ये डिफेंसिव कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज अपनी डिफेंसिव कर रहा है। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज टू डिफेंड। और फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला है जो कि कर रहा है, बस ये वाला कर रहा है अटैक, ऑलवेज अटैकिंग। ठीक है, और फिर हमारे पास ये कर रहा है both. Sometimes they are attacking and defending. ठीक है, तो यहाँ अटैकिंग कर रहा है और डिफेंडिंग कर रहा है। अच्छा, तो जो डिफे अब पर्पल टीम के अंदर जो है ना, अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक दे डू नॉट हैव
proper functional purple team. They only have blue team and red. And there are other companies which they actually do not do any sort of penetration testing or vulnerability assessment. For compliance requirement, they just do it once in a year. Okay, and most of the organizations they have GRC and blue team in place. So they and also blue team create rules to defend the attacks, and then red team create strategies and activities to penetrate the infrastructure. Purple team is doing both of the things, but is doing the attack. It's creating rules and then specifically checking that rule and exploiting that rule. Okay, there are three different tiers in security operations center. Okay, before the tiers, we already know that the purpose of the security operations center is to do threat intelligence, do proper monitoring, do incident response, do digital forensics, do malware analysis, do uh, all sort of activities to make sure that the organization is not hit by the cyber attack. There are and security operations centers, what we can call it, the structure of security operations center, it depends on each organization. So let's say that one organization has outsourced the security operations center, other one did not. Okay, other one maybe it's inside, like अंदर ही बैठे हुए हैं, और उन लोगों ने सिर्फ एक चीज आउटसोर्स की हुई है, लेट्स से थ्रेट इंटेल आउटसोर्स किया हुआ है. ओके, so so no, that's how different structures in different companies, and that the companies depend करती है कि um, or the feasibility of how much they have to spend on cybersecurity, and whether they have enough, let's say, resources to make sure that like 24/7 they can manage. Okay, there are some companies where they say that L2 and L3 is outsourced and L1 is in the house. Mm, और there are other companies के सारा ही outsource कर देती है. ठीक है, all three tiers like level 1, level 2, level 3. So level one's job is to decide if that's false positive or not. Level two's Level two will overlook for all the alerts received from L1, saying that this was not false positive. This one was true positive, and then he investigates this alert. And if he needs to escalate it to L3, then he escalates to L3. L3 का L3 के roles में, like the roles of L3 is to create, L2 also does suggest some rules in some companies, but mainly L3 create rules, create use cases, create strategies, and take the techniques from the lesson learned reports to and implement it in the security operations center. Also, level 3 do the investigation, the digital forensic investigation, and there are some companies where they do threat intel as well. So how the alert is being generated and how the escalation works, escalation workflows are defined. Alert generation is dependent on, let's say that let's say that this is a Steam dashboard. We have two rules. We have two rules. Um, we have two sets of rules. This is this is customized. Oh, this is built-in rules. Let's start with built-in rules.
and this is customized. So built-in rules will have these famous ones like after 1 minute of 5 login failures, an alert should be shown. So an alert should be triggered. Okay? It's better. An alert should be triggered. But what about the customized rules, right? Let's say that my environment has an OT servers, operation technology servers, where we deal in factories. Okay, here we like there are some machines that we do not receive. So it's not as regular flow of the network. This is very sensitive, and we receive hits, but it depends on how exposed that server is. So let's say that this says that after 1 minute, right here, I forgot to write 1 minute. Okay, here we say that in in 30 seconds, we are customizing the rule. Okay, in 30 seconds, if we receive 5 login failures, so we have decreased the threshold of the log. We have decreased the threshold of the timeline. We have made it from 1 to 30, from 1 to 30 seconds, from 1 minute to 30 seconds, and are we are saying that okay, if we receive the same 5 login failures, 5 login failures, if we receive 5 login failures, an alert should be created. That's how we customize the rules. So there are many other frameworks that we can use to be able to create rules, and there are many built-in rules. And once the SOC is very new, let's say that SIM is just deployed and it's not past 1 month or 2 months, it's uh, it's very new to the infrastructure, right? And the security operations center analyst also considering this as still immature and that needs improvement, right? And after some time, once the security operations center says the L1 resource says that there are many alerts that we identify as false positive, then it means that we need to do a fine tuning, right? Let's say that we receive many alerts of login failures. This same alert, this same rule is being triggered after like 10 minutes and 20 minutes. It means that, and once the analyst says that this is false positive because we have confirmed from the user, it means that such failures happens. Okay. So what we do then, we increase the timeline. We say not after 1 minute, we say that after 3 minutes, and we increase the login failure attempts uh, to 15 or to 20 or to 30, depending on the infrastructure. We set the rule to, let's say, 30 after 4 minutes or after 2 minutes or after 3 minutes. That's how we do the fine tuning, right? That's how fine tuning works. So this is how the alert is generated, and this is how it is fine tuned, and this is how we customize it. It depends on the infrastructure itself. How the escalation works, like, well, what is the strategy of designing the escalation workflow? So we have different teams in each infrastructure. We have different teams. Just excuse me on the coughing.
So we have different teams. Let's say this is this is the knock team. This is the integration team. This is the integration team, and this is the, what do we call it? Let's say patching team, and this is our, let's take a non-functional team. This is a sales team. Now, in every team, there are resources. So not everyone is doing the same job, right? Not everyone has the same responsibilities. Everyone has a different responsibility, right? So the knock team also has three tiers: level one, level two, level three, and then the SOC manager. Sorry, the knock manager. By the way, so L3 also can happen to be a SOC manager in some cases, and in other cases, L2 can also act as a team lead, and L3 will be acting as a SOC manager. So there are infrastructures where, let's say that you have a company in Germany and you have a parent company in Australia. So um, the company of the company which is in Australia is being monitored from Germany, right? So that's how they divide. So they divide the team members into who is going to be the shift manager, and then the team lead of, let's say, the company which is in Australia. Okay, L1, L1, L2, and we have L3, and then we have the manager. So when something happens here, L2 will, what will he do? He'll inform knock. Generally knock. Knock will receive the notification and it will be assigned to L1, L2. Because here L1, it will be assigned to L1 in few cases, and L1 will say that if he's not able to resolve what L2 asks for, then L2 will step in and resolve the issue. If L2 is not able to resolve the issue, or it requires higher permissions in it requires higher permissions for accessing some information, then it will have to escalate it to L3 and then to the manager. Same goes to integration, patching team, or any other technical team. What about sales team? Why did I mention sales team? Because sales team, let's say that we are receiving the login failure alert. The login failure alert will is coming from a user who is working in a sales team. Here, what we'll do. So there is, in every organization there is a support team. This support team will be contacted by the security operations center analyst and will be asked about user Kelly. This is a user, okay, at abc.com. So the security officer will ask about this user, and it will give him, support team, it will give them the username, and then the support will contact the sales team and will ask about this user. So let's say that if he did not receive any reply from if he did not receive any reply from the sales team, then the support will do will do a follow-up 2 times, and the third time, because we are seeing the failures, like it's constantly happening and it's not being
it's not stopping at any step. So what will the security operations center do is contact the support team and send the final reminder, and after that it will isolate the user. So sales team will also be having like sort of manager, and then there is someone who is team lead. There is someone who is uh, handling different stuff in sales team until the higher management. So sales team also has an HOD, right? So support team will last contact this HOD, or if the case is critical, maybe he'll call him, and after that he will isolate the either he'll isolate the host name that is assigned to Kelly, or he is going to disable the username. So the challenges that SOC analysts face is when you see many alerts and the L1 is doing false positive on each like he's selecting the whole like he's selecting the alerts like this, and he's doing right click and close. Like what does he do? He has harmed the organization because you might like without even analyzing, right? So what he do is he maybe there is an alert, there is a rule, maybe there is a rule which was triggered, and it was not false positive, it was a true positive alert. Now this alert will go unmonitored, and maybe there is some privilege escalation happens, maybe there is a lateral movement happening. That's why you need to do fine tuning. Fine tuning is very important in the security operations center. Now there are tools that do the fine tuning based on the on whatever they learn from them, such as through machine learning, through AI. Moving on to the micro attack. Let me open it here. Let me open it here. I'm doing a quick recap. Just a moment.
यार आप लोग मुझे बस 2 मिनट दो, और बस 2 मिनट। So हम लोगों ने फिर माइटर अटैक को पढ़ा था, एंड वी हैव सीन the techniques and the tactics, right? For each of them. So these are like around 13 tactics. These are around 13 tactics, and reconnaissance, police escalation, initial access. So there are many techniques, right? These techniques are used by the attackers order to in order to attack the system, or take the access, or compromise the whole infrastructure. If you look at the uh, let's do this, create or modify system process. How many techniques that does have, it's given the example as well, and it's giving the mitigations as well. So mitigations, इसी तरह आप लोग का अपना माइंडसेट चलना चाहिए कि अगर हम लोगों के पास limiting software installations, so it will not let any other software be installed without the approval of higher management. Okay. And also and also and also so like in many organizations, what support do is they have a software center where legitimate and approved softwares are enabled, and any user uh, who wish to download a software that is already whitelisted, he can go to the software center and can download it. So if you limit this, not any other process can be created or modified through system process. तो ये सारी मॉडिफिकेशन डिटेक्शन टेक्निक्स हैं, इट कैन बी यूज्ड। सी प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट मींस दैट इफ यू आर, लेट्स से कि हमारे पास एक यूजर है, और वो यूजर जो है ही इज एबल टू, लेट्स से कि he is able to, like, I am user A, and user A does not have the permissions to download a software. बट व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जो है ना अपनी यूजर सेटिंग्स और यूजर को चेंज करके उसको मैं एक ग्लोबल एडमिन या लोकल एडमिन ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। व्हाट विल हैपन हियर, अब मेरे पास राइट आ जाएगा टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर, टू मॉडिफाई एनी प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह आप अपना माइंडसेट चलाओगे ना, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्रिएट यूज केसेस। ये हम लोग के पास यूज केसेस के लिए यूज होगा। आप कोई भी दूसरी भी टेक्निक उठा लो, तो यहाँ पर जो है ना, ये सारी ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास
उसके बाद हमारे पास, अब मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगूंगा ना तो फिर जो है ना हमारे पास मसला हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जीरो ट्रस्ट, व्हाट इज जीरो ट्रस्ट? जीरो ट्रस्ट मीन्स कि यू कैनॉट ट्रस्ट एनी डिवाइस, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। The other model is like the typical model is always verify, never trust. ठीक है, ऑलवेज वेरीफाई एंड ऑलवेज ट्रस्ट। ठीक है, वो एक दफा ट्रस्ट हो जाता है तो इट्स ऑलवेज वेरीफाइड। बट इन जीरो ट्रस्ट के वो किसी चीज को भी जो है ना आपकी किसी चीज को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज वेरीफाइंग। तो हमारे पास जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन गॉन टू द has been gone to the modern has been gone to the modern technology where zero trust is now enforced। और अब जो है ना जीरो ट्रस्ट पे ज्यादातर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर जो है ना जीरो ट्रस्ट पे होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ा था कि नेटवर्क में टीसीपी आईपी क्या होता है, हमारे पास ओएस मॉडल क्या होता है, हमारे पास और हमारे पास मलिशियस ट्रैफिक किस तरह डिफाइन होती है, हमारे पास कौन से फेमस पोर्ट्स हैं, और हमारे पास पैकेज बेस्ड और फ्लो बेस्ड मॉनिटरिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आईडीएस आईपीएस और नेटवर्क एनॉमली डिटेक्शन। और इसके अंदर हम लोगों ने आईडीएस और आईपीएस के अंदर किस तरह की डिटेक्शन होती है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, इंट्रूजन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है, सिग्नेचर बेस्ड बिहेवियर क्या होता है, और बिहेवियरल डिटेक्शन क्या होती है। सिग्नेचर बेस्ड आप लोग के पास जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल थी, कल मैंने आप लोग को बताया था कि आईओसीज और आईओएस क्या होते हैं। तो सिग्नेचर जो हमारे पास हैशेस होते हैं, जो ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास, दिस हैज टू बी दिस हैज टू बी क्लीन। और सिग्नेचर आपके यही होते हैं, एक प्रोसेस का सिग्नेचर यही होता है। ये तो शार्ट 56 हमारे पास MD5 होता है, इसके जरिए आपके पास चेक हो जाता है कि इफ इट इज मलिशियस और नॉट। एंड ऑल्सो बिहेवियर डिटेक्शन के अंदर, सो दिस इज अ बिहेवियर, this is a behavior where this was executed and this initiated, and then there is another executable that was reading processes. There was WMIC executed, and then there was a wanna decryptor also executed. So this is a behavior, and such behaviors are being detected through intrusion prevention system and are being blocked। तो हमारे पास कुछ एंड पॉइंट सोल्यूशन होता है वेयर सिग्नेचर बेस्ड भी डिटेक्शन हो रही होती है और बिहेवियर बेस्ड भी डिटेक्शन हो रही होती है। अच्छा, आपको मैंने सीम आर्किटेक्चर का थोड़ा सा बता दिया था, और लॉग पाइपलाइंस क्या होती हैं। जो लॉग पाइपलाइंस का अगर एक थोड़ा सा, अगर मैं हाई लेवल अगर आपको बता दूं, तो हमारे पास लाइक अगर मेरे पास ये विंडोज है तो विंडोज में एक हमारे पास सिस लॉग के जरिए सारे के सारे हमारे पास जितने भी लॉग्स होते हैं विंडोज के, वो आपके पास इंजेस्ट हो जाते हैं इन द सीम सॉल्यूशन। और इसी तरह फिर हमारे पास मैक का अलग होता है आइडेंटिफायर, फिर हमारे पास लिनक्स का अलग आइडेंटिफायर होता है। ये सारे यूज होते हैं टू बी एबल टू रिसीव द लॉग, द रिक्वायर्ड लॉग्स। ठीक है। हमारे पास फिर उसके बाद हमने एंड पॉइंट पढ़ा था और ईडीआर के फंडामेंटल्स देखे थे। एंड पॉइंट एंड पॉइंट हमारे पास जो क्राउड स्ट्राइक है, कल मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ अपनी एंड पॉइंट की
मार्केटिंग करता है और अपने ही जो उसका एजेंट है, अराउंड कितने 1.21 किलोबाइट का कोई एजेंट है उसका, और उसी के अंदर वो जो है ना, उसी के अंदर वो अ, उसी एजेंट के थ्रू वो आपको पूरा का पूरा आपके एनालिस्ट को पूरा पूरा डैशबोर्ड देता है, वेयर ही कैन आल्सो इनेबल सीन। मजे की बात यह है कि इन लोगों ने भी नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, कैन इनेबल सीन। अच्छा, एंड पॉइंट के अंदर प्रोसेसेस आ जाते हैं, फाइल्स आ जाती हैं, रजिस्ट्रीज आ जाती हैं, द होल नेटवर्क विजिबिलिटी ऑफ ईच एंड पॉइंट एंड व्हाट इज, लेट्स से कि मेरा ये पीसी है तो इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, लाइक ये वाला फेलियर भी अगर हो रहा है तो वो किस आईपी पे हो रहा है, और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस है, तो इसके अंदर कौन सी फाइल यूज हो रही है, वो सारी चीजें थ्रू थ्रू द ईडीआर कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थ्रेट हंटिंग मेथडोलॉजी। थ्रेट हंटिंग में हम लोगों ने थोड़ा सा जो है इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज, थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेक्शन के बारे में बात की थी, एंड देन इंडिकेशन इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज, इंडिकेटर ऑफ अटैक। इंडिकेटर ऑफ अटैक के ऊपर बात की थी कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई आईपी आ रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल रैंडमाइज्ड आईपी है, लेट्स से ये आईपी आ रहा है, ये हमारे पास आईपी आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास इंडिकेटर ऑफ अटैक है until it is confirmed कि he is successful and he is able to log in, और बिकॉज लॉग इन फेलियर का मतलब क्या है कि कोई तो कोई ना कोई ब्रूट फोर्स हो रहा है, राइट। हमारे पास यहाँ पे टाली के ऊपर एक टूल आता है जहाँ पे मैं यहाँ पे हाइड्रा करके, ठीक है, हम हाइड्रा करके मैं कोई भी होस्ट का, मैं कोई भी सर्विस का दे सकता हूँ, ठीक है, इस तरह कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे एक यूजर को देकर एक पासवर्ड लिस्ट डॉट exe का वो दे दूंगा, इसके अंदर सारे पासवर्ड और वो ट्राई करता रहे, राइट। तो ये फिर जो सॉक बैठा होगा उसके पास ये अलर्ट जनरेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास हमारा आईपी भी चला, पब्लिक आईपी भी चला जाएगा, एंड द यूजर विच आई एम टारगेटिंग, so here we are targeting the only user, but but in so here I'm targeting a user, right? तो यहाँ पर तो चल एट एबीसी है ना, तो वहां पर भी हमारे पास एक स्पेसिफिक यूजर होगा एंड विल टारगेट दैट, द एडवर्जरी विल टारगेट दैट, तो हमारे पास डैशबोर्ड पे आ जाएगा, ये हमारे पास आईओए बन जाएगा until I am successful and this tool has found me the exact correct password। ठीक है। लिविंग ऑफ द लैंड के बारे में बात की थी, हमारे पास WMIC, और हमारे पास डब्ल्यू गेट, हमारे पास कर, ये सारी हमारे पास हमारे पास कर हमारे पास कर कमांड आ गया, हमारे पास कर कमांड आ गया, एंड सो द कर कमांड, जैसे ये सारे प्रोसेस हो गए, ये प्रोसेस क्या करते हैं कि अ, हमारे पास यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक प्रोसेस यूज नहीं होती, कोई स्पेसिफिक फाइल यूज नहीं होती, तो ये डिटेक्शन में नहीं आती। लेट्स से कि हमारे पास एक कंप्रोमाइज हुआ, एक हमारे पास एक होस्ट कंप्रोमाइज हुआ, उसके अंदर हमारे पास कमांड लाइन आ रही है कर्ल समथिंग और कर्ल डैश एच एंड देन एच टी टी पी वॉर डिक्रिप्टर डॉट टी, ठीक है। तो उसने वो डाउनलोड कर दिया और उसने एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो दिस इज लिविंग ऑफ द लैंड टेक्निक।
Okay, so this what we have been gone through now. Let's do something here. Let's take a challenge. It was a suspicious USB stick. Browser forensics. So let me see this. So so now we have this file. Okay, put this file. Okay, that says around 25 minutes. We can do this in the coming session. We'll do the forensic of the browser. Okay. Let me paste it here. And also let me paste it in the group. Um, ओके मालवेयर एनालिसिस तभी कर सकते हैं हम लोग बिकॉज हमारा टॉपिक ही मालवेयर एनालिसिस है तो कमिंग सेशन में विल डू द मालवेयर एनालिसिस अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस थोड़ी सी जो है ना अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि हमारे पास पीई फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है हैशिंग एंड सिग्नेचर्स क्या होते हैं स्ट्रिंग्स एंड इंपोर्ट्स क्या होते हैं आईओसी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमारे पास स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस होता है और हमारे पास डायनामिक मालवेयर एनालिसिस होता है ठीक है तो एक्चुअली वी कैन डू बोथ अगर हमारे पास टाइम होगा ना कमिंग सेशन में हम लोग जो है ना इसको रखते हैं इसको ज्यादातर हम लोग ये वाला कर लेते हैं ठीक क्रिप्टो माइनर वाला कर लेते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग वाला कर लेते हैं ठीक है मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर व्हाट टूल्स आर रिक्वायर्ड make sure you analyze the sample in contained environment to recommend a virtual machine where internet access is disabled. The sample is zipped with password infected. Okay, you guys have to make sure also to do that. What we can do here is मैं यहाँ पे एक machine create कर दूंगा और उस machine को लेके फिर हम लोग जो है ना उसके अंदर ये download करके what is the name of the compiler used to generate the exe? This malware, when executed, sleeps for some time. What is the sleep time in minutes? I'm going to show you that. After the sleep time, it prompts for user password. What is the correct password? What is the size of the shell code? Shell code injection involves three important Windows API. What is API? APIs are endpoints. And endpoints to let's say कि हमारे पास कोई बंदा login हो रहा है ठीक है तो how will he log in you have to define the API for him to log in and what is also used for API can be used like ChatGPT. Let's say you have a you have to use ChatGPT in an AI agent. So you will have to use you'll have to have the you will need the API of the ChatGPT in order to use. So it's the endpoint where you can fetch the data from the ChatGPT. Okay. So what is the name of the API called? What is the name of the API called used? And we'll see how can we fetch that. What is the name of the victim process? We have to find the extension. What is the file created by the sample? After this file was executed, what was the file that was created? What is the message in the created file? So whenever the execution happened, there was a message that was shown. What is the program that the shell code used to create and write this file? Okay, is we'll go through this and
Browser forensics. This is called incident response. SOC analysts also do this. Our SOC alerted that there's some traffic related to crypto mining from a PC that was just joined to the network. The incident response team acted immediately observed that traffic is originating from browser application. After collecting all browser data using FTK Major, it's your job to use the AD1 file to investigate the crypto mining activity. Uh, so this guy is using. There is a tool also for the. I'm gonna I'm gonna list the tool here. I'm gonna send it to you. Okay, there are many tools. We'll see which one we'll use. So we'll do this together, and we'll see how can we analyze and how can we understand what is the file structure and how what is hashing and signature. We all know what is hashing and signatures. We have said it many times. Strings and inputs. I use it. Okay, so this file was downloaded. Browser data infected. No, okay, BTLO. Why is this not okay? This is not okay. So 81 file can be uploaded in few tools. I know. We'll see what tools can be used. So we have two we have two sessions for malware analysis. Let's do in the first session. Let's do this, and we'll resolve the crypto miner. And in the coming in the next session, we'll do the see. I have some active challenges of digital forensics, reverse engineering, erosion center, TTF flag, response. Reverse engineering. Reverse engineering is also comes under the malware analysis ransomware script. So this is it should not have any write-ups. Yes, it does not have any write-ups. So one of our web servers. So we can do this as well.
Let's see if you find the right tool. We'll do this. And if you guys have any questions regarding whatever we have been taught through the sessions, just let me know here. ठीक है, अदरवाइज आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। आप लोगों में से आई थिंक आप अभी सिर्फ हम दोनों ही है, राइट? अच्छा, साजिद है, मोहम्मद अली, अली हसन है। आप लोगों में से ये वोलेटिलिटी डाउनलोड किया किसी ने? देखो, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप लोग जब यूज करते हो ना, खुद ही यूज करते हो, तो खुद ही जब अगर आप लोग यूज करते हो ना टूल्स, चलो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप लोग खुद ही टूल यूज करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मुझे देखो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, लाइक आई कैन नॉट सॉल्व दिस, सो आई हैव टू गो थ्रू कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो हाँ, इंशाल्लाह कर लेना। और अभी अभी कर लोगे तो फायदा ये होगा कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है? और दूसरा ये कि यार इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है एआई टूल से, आप उसको उठा के ये डालो, आप उसको ये दो। जैसे कि आप उसको ये बोल रहे हो कि बॉक्स, ब्लैक बॉक्स को उठा के आप लोग ये दे दो, बोलो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो आपको बंच ऑफ टूल्स और बंच ऑफ कमांड्स दे देगा। ठीक है, वो सबसे पहले बोलेगा कि तो देखो, उसने सबसे पहला कमांड दिया है कि आपके पास, बिकॉज आप डॉट यूज कर रहे हो, तो आई डोंट यू डू दिस। मुझे याद पड़ता है इस कमांड से भी नहीं हुआ था कुछ भी, क्या पता हो जाए। नहीं हुआ। सो इसको एज इट इज उठा के दो, एंड देन यू गाइस कैन सॉल्व दिस। तो देयर आर मेनी वेज, ये आराम से हो जाएगा। दूसरा ये बोल रहा है कि आप एक फाइल्स डॉट टीएक्सटी के नाम पे ये कर दो, ठीक है? फाइल स्कैन का उसने क्या किया, फाइल डॉट टीएक्सटी बनाया, बट उसने जो है, सॉरी, फाइल डॉट टीएक्सटी, फाइल्स डॉट टीएक्सटी, अच्छा ठीक है, फाइल्स डॉट टीएक्सटी है हमारे पास ऑलरेडी। तो दूसरा कमांड वो ये बोल रहा है कि फाइल स्ट्रिंग करके इसके अंदर फाइंड कर लो, बट दिस वोंट वर्क। ठीक है, दिस वोंट वर्क बिकॉज उसने डंप ही नहीं की वो फाइल। तो दूसरा ये बोल रहा है कि आप उसके ऊपर चले जाओ, पावर शेल के ऊपर चले जाओ, ठीक है? तो देर आर मेनी वेज टू रिजॉल्व एनी ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यू हैव। और अगर आपसे आपसे हो जाता है तो आप लोग जो है आगे भी बता सकते हो, यार इस ये मैंने इस तरह किया था, ठीक है? और दूसरा ये है कि हमारे पास ना टूल्स आ जाते हैं। अच्छा, हम लोग एक सेशन में क्या करेंगे कि विल सी कि हमारे पास एक डिजिटल फॉरेंसिक्स एनवायरनमेंट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है ना, सारे रिक्वायर्ड टूल्स मैं आप लोग को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और थोड़ा थोड़ा यूज करके दिखाऊंगा। तो आप लोग के पास एक एक ओवरव्यू आ जाएगा कि एक इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एनवायरनमेंट बनता कैसा है, ठीक है? So if you guys still have any questions, just let me know on the in the group, or just WhatsApp me personally. I'll answer you all. ठीक है? कोई सवाल तो नहीं है आप लोग का before we end this session? चलें, thank you so much everyone. Have a great day ahead. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर।